बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, हमेशा की तरह एवरी मंडे 6 to 7 PM हम लेके आते हैं लीगल लाइव शो, जिसमें हम आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम की जो मेहमान हैं हमारे साथ वो बैरिस्टर नबीला मलिक हैं। मिस नबीला, वेलकम टू आवर शो। Thank you very much, Riaz. बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं अपनी तरफ से वीनस टीवी की तरफ से गुल्लो चैम्बर की तरफ से तमाम व्यूअर्स को नया साल की विशेज़ के विश गुड लक फॉर न्यू ईयर्स एंड उम्मीद इसके साथ कि आपका ये साल अच्छा हो और आपकी तमाम जो नए ख्वाहिशात हैं, जो पॉजिटिविटी आपके है, उसमें आपको और अच्छे रिजल्ट आएँ। हम लोग before we start the programs, I just mentioned we will discuss today about asylums matters. If anybody have an issue relevant to the asylum pending application or want to talk about an issue relevant to the asylums, we'll do more welcome for these questions. But at the same time, we'll take your calls if anybody have any other issues. We're more than happy to be answered. So, Ms. Nabila, I think before we start the live phone calls, I will, because today's topic relevant to the asylums issues, could you please just briefly, because the people, a lot of people, they have always confused between the human rights and the asylum issues. Yeah. So, how you identified the asylums and the human rights, please? Asylum is really and a claim that one makes because they're not able to live in their home country, the country of their nationality. Right. And they claim asylum in a safe country in order to gain refuge there. Right. So there are many ways in which one can claim asylum. Right. Of course, political turmoil in different regions have led to a large number of refugees in a number of different countries. For instance, we know that the Rakhine community in Myanmar have fled because of the persecution they've been suffering to Bangladesh, and they're now housed in UNHCR camps. Similarly, we know that there are large numbers of Palestinians based in Lebanese refugee camps, usually supported by UNHCR, who support these camps. There is a registration system that exists. And then there are those who are based in countries like the Greek islands, the Italian islands. Just on the behalf of the client, I'm asking just very short and brief. The asylum means if anybody have any fear of his life for the persecution, then he can apply asylum here. That is, we can say? Very simply, it is, well, it's not just fear of one's life, because of course you can apply for asylum on the basis that there is risk to you in your home country. Right. So there could be risk to you from imprisonment unjustifiably, where the state isn't protecting you but in fact persecuting you because of political opinions that you might hold. Right. You may belong to a social group. For instance, women could be a social group in a country like Pakistan, where unfortunately there isn't sufficient sea of protection for domestic violence victims, for those who are rape victims, who are unfortunately, when we're reporting rape, sometimes accused of adultery instead. If there's a risk in home country, you can apply for the asylum in a certain to meet the certain conditions. Yes, so race, religion, social group, political opinion could be grounds that place you at risk in your home country and lead you to leave that country. And you have to obviously show that there's no effective system in your country and you can't live anywhere else in your country. Relevant to the same scenarios, a lot of people they're saying, let's say if they left their home country and flying to some other country and stay sometime there, then they come to the UK. But normally the Home Office say, when you want to the next, last country, why don't you claim asylum in that country? That's normally is, I think, asking the questions to the Home Office on the claim for asylum. The interesting thing about claiming asylum in a safe country is that often people will be at the hands of their traffickers, and they will have pre-arranged plans for them. So many people will be
brought to countries like the United Kingdom because there is a network of traffickers that work in order facilitating exit from certain countries and entry into the United Kingdom. I was just going back to, if I may go back to something I said earlier about people being in Italian camps and Greek camps. They end up there because agents are trying to bring them into Europe, but they are stopped sometimes by the Greek authorities or the Italian authorities under something called an EU-Turkey agreement, because they're entering from Turkey into Europe. No campus, yes. They have the agreement is that they should be returned back to Turkey under the European-Turkish agreement, which is why a number of people find themselves either stranded in camps in Turkey or camps in the Greek islands. But so the point that you made, interestingly, I think from the controllers I'm asking, they say just times for the break. Stay with us. मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. Break after break लेते हैं कॉल. जी फरमाइए. Hello. Hello. हेलो जी फरमाइए. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं. हमने फरवरी में हमारा ड्यू है एक्सटेंशन. हमें 2016 में मेरी बच्चियों की बेस पे हमें 10 इयर्स की 2.5 साल का वीजा मिला था जी. रूट पे लीव मिली थी जी. मैंने ये पूछना था कि अब मैंने सुना है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम किस तरह से भेज सकते हैं. और सवाल ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं. सेकंड सवाल क्या आपका जी? सेकंड सवाल क्या आपका? सेकंड सवाल ये है कि मुझे फी वेवर के लिए भी थोड़ा गाइड कर दें कि हमें वो एप्लीकेशन. थर्ड सवाल क्या आपका जी? एप्लीकेशन है वो साथ ही डालनी है. व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन? पहले डालनी है या उसके डॉक्यूमेंट्स हम किस तरह से भेजेंगे, क्योंकि वो भी ऑनलाइन ही हमने करनी है. मैं बंद करती हूँ, प्लीज आप मुझे टीवी पे बता दें. बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, थैंक यू मच, अप्रिशिएट. देखिए 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक एक ट्रांजिशनल पीरियड था कि तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो पेपर से ऑनलाइन हो गई हैं. ऑफ कोर्स अब जो लोग भी अप्लाई करेंगे किसी की कैटेगरी में भी तो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगी. अब उसका ये मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन कर दिया तो फिनिश हो गया. अब ऑनलाइन करने के बाद आपने जब सबमिशन करोगे वो सबमिशन कंफर्मेशन प्लस आपके जो तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर दिस एप्लीकेशन वो आपने लगा के अपने होम ऑफिस को सेंड करने हैं. ये तो पहला पार्ट है. एक प्रोसीजर हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. पहले पेपर में करते थे, अब ऑनलाइन करते हैं. वो सबमिट हो जाती है, लेकिन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ भेजने होते हैं. अब दूसरा सवाल फी वेवर का था. ऑफ कोर्स अगर अनफॉर्चुनेटली आपके हालात ऐसे हैं कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मनी नहीं है, तो आपने एक फी वेवर एप्लीकेशन होती है विद जो आपकी रियल एप्लीकेशन जो आपकी ओरिजिनल या बेसिक एप्लीकेशन है फॉर एक्सटेंशन, उसके साथ ही आपने ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे मेरे पास हालात अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है फाइनेंशियल, तो मुझे फ़ीस से माफ़ी दी जाए. और उसको फी वेवर फॉर्म कहते हैं. वो फॉर्म फिल करना होगा, साथ अटैच करना होगा. तो वो डिपेंड करता है कि होम ऑफिस कैसे कंसिडर करता है. वो आपको तमाम आपके बैंक अकाउंट्स, तमाम आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपका खर्चे और इनकम तमाम जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे. अगर तो अब 2 स्टेप में आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी. फर्स्ट कि क्या आपकी एप्लीकेशन को जो फ़ी वेवर अप्लाई किया है आप उस पर क्वालिफाइड करती हैं या नहीं करती. लेकिन अगर आप उसमें क्वालिफाई करती हो या ना करती हो तो उसका आपकी और जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर तो उन्हें ग्रांट कर दिया आपको फी वेवर एप्लीकेशन तो फिर आपकी सेकंड एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, वरना आपको वापस भेज देंगे कि आप फ़ीस साथ लगाएं, दोबारा अप्लाई करें, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं. ये प्रोसीजर है. पहले भी यही था, अभी यही है, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का बस इतना डिफरेंस आया है कि अब आपने पहले फिल करना है, फिर प्रिंट निकालना है. पहले ये था कि प्रिंट निकालने और फिल करके आप भेज सकते थे, तो इसलिए इसको नॉर्मल समझे, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है. आपकी कॉल का शुक्रिया. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. जी फरमाइए. हेलो. हेलो जी फरमाइए. हेलो सर. Yes, my question is, we have put our applications in 2017, which got refused, and then we got in country appeal, right? When we went for JR, everything got refused. We did not get permissions for court of appeal, and then we put recently 2-3 months ago we have put FLRM application on the basis of our 7 years child. So the question is, I mean, during before Christmas.
Christmas, we got a call from Home Office saying that we have been granted leave to remain. And then again, after 2 minutes, he called me back and he said that, no, sorry, we are not granting you any visa. The reason is you have recently put the application. So what is your question? Nobody understand. What is your question, madam? The decisions of your child. And they have called me in January 8th for the interview with my 2 children. And I have told them that they have told me that they are going to write the letter as well. Excuse me, and could you tomorrow please? Is the date, but I don't know whether I should go or not because I have not received any letter from them. So what do you think? I mean, what should I do? Should I go or should I not? Or is it, what is it in my favor or it's risky or what I say? Okay. I'm very surprising you just start your statement and finish and phone call is cut. Could you please tell me, did you receive any letter from the Home Office or you received the phone call from the Home Office? No, at first I have received the phone call from them and I told the staff clearly that will you please kindly send me a letter in my Home Office. Okay. He said yes. Okay, listen, excuse me, He have not sent me yet. Okay, madam, if you don't mind. When you receive a letter, you're saying you received a letter, and did they mention in date of the interview? Did they call you for the interview now? No, I have not received letter. I have not received any letter from them till now. Tomorrow is the date. Okay, no problem. I think I'm just going to be on reply your questions. You can listen and you can watch the TV, please. Madam, first of all, very sorry because you just tried to explain all your story, what has happened in the last 1 year, 2 years with your application and A and B and C. I just only advise you because this program is live, time is short, is limited, and always ask the questions to say, requesting the client, please call and just a brief question. But I can only at this circumstance advise you, you should speak to your solicitor. Any phone call from the Home Office, I'm not relying, I'm not advising you should follow and compliance the phone calls. Normally, the Home Office, not normally, I believe nowadays every single case is done by the email, by the letter, by the post. So I strongly request you, advise you should speak to your solicitor or send a letter to the Home Office in writing, tell them whatever they're looking, they're seeking, they want from your side. Either they are by the internship or any letter and supporting documents, they should send you in writing, then you can reply. Or you can show the solicitor if you have a solicitor, otherwise you can go any solicitor, pay the consultation fee, take advice and follow the directions. Unfortunately, pending application or what you're talking about, you should receive the phone calls and one time they say A and second time they say totally opposite. I'm not suggesting anything at this stage. My advice, always do the correspondence by the emails or in writing. Then you can, I think you can be safe. Nabila, you just want to put some comments on that, please? I think that it's important if you've been called for Home Office interview that you make all attempts to attend the interview. She attended, she said the last time she attended in January. No, she's about to attend on the 8th of January. She's asking whether she should attend, and what she should do is find out what the purpose of the interview is, but she should make all efforts to attend the interview. What I am concerned about is the notion that she should avoid attending even though she has 2 children. They've clearly asked her to attend for a purpose, and therefore if she has any difficulty she should phone them and try and rearrange, giving them the clear reasons and ensuring that they understand those reasons. But not to turn up for an interview, unfortunately, will mean that she's not complied, and they will then reject her asylum claim if she has an asylum claim. Yes, if this is the case, you see the phone call, the letter, they call for the interview, you should speak again, you should speak your solicitors. I'm not advising you should go just blindly and get the interview. You should take the representative with you or write a letter. But my, again, advice, please speak with some solicitors. Phone calls, live advice is not, I think, sufficient at this scenario. Better you should either your current solicitor or representative or go any other solicitor, ask them at this circumstances, at this position, what should I do? We just only can advise this at this stage. Thanks for your call, but the next call की तरफ जी फरमाइए. Hello. हेलो जी फरमाइए. जी सर
जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल ये था कि मैंने असालम अप्लाई किया था, राइट। ठीक है, और अभी उसमें मुझे ना पाक वीज़ा मिला है, ठीक। जो मैंने असालम अप्लाई किया था नेशनैलिटी साउथ अफ्रीका की है, राइट। तो अभी उसके बारे में क्या लाया है? मेरी बाई बोन मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मेरा ट्रैवलिंग का मैं पाकिस्तान ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? आपने अफ्रीका से आए थे, जहाँ पे असाइलम क्लेम किया, 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया और अब आप पाकिस्तान जाना चाहते हो, राइट? मतलब मैंने मेरी जो नेशनैलिटी वो साउथ अफ्रीका की है, उसी बेस पे मुझे मिला है। ओके, तो आपको असाइलम क्या था? आपका अफ्रीका से प्रॉब्लम था या पाकिस्तान से प्रॉब्लम था आपको? जी मैंने साउथ अफ्रीका के बेस किया था। Okay. You can still return back to your country if you have status in the United Kingdom. If I understand correctly, you were granted 5 years refugee or asylum status in the United Kingdom. That 5-year discretionary leave is still continuing today, and you're asking whether you should be, whether you could go back to your home country. There's nothing to stop you from going back. However, it does indicate that you don't have problems, and so you must bear in mind that your 5-year status needs to be renewed at the end of the 5-year period. And if you have decided that you no longer have anything to fear in your home country, then you may find that your asylum status in the UK is not extended. आपने बोला कि आप शायद के पास आपने अफ्रीकन नेशनलिटी है और उसकी बेस पे अपने असाइलम क्लेम किया। नॉर्मली जिस कंट्री से आपकी नेशनलिटी हो, जिस कंट्री को आपको फियर हो आपकी लाइफ को, और आप असाइलम क्लेम करते हो यूके के अंदर, उसके अलावा दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो तो कोई स्टॉप नहीं करता आपको। नेशनलिटी आपके पास अफ्रीकन है, आप अपने यूके में रह रहे हो, आप इंडिया, पाकिस्तान, किसी और कंट्री में वीज़े पे जाना चाहते हो, तो यस ऑफ कोर्स वहाँ के वीज़ा लेके आप जा सकते हो। लेकिन जहाँ से अगर आपने क्लेम किया हो और ड्यूरिंग योर रिफ्यूजी स्टेटस से वहाँ जाना चाहे हो, तो देन फिर प्रॉब्लम आता है कि होम ऑफिस कंसिडर करता है कि अगर आपको बेस पे मिला था वीज़ा कि वहाँ जाके आपकी लाइफ को ख़तरा है, अब आप गए हो, वापस आ गए हो, तो ख़तरा ख़त्म हो गया, सो यू शुड गो बैक टू सेटल योर होम कंट्री। लेकिन आपके केस में डिफरेंट सिनेरियो है, आप अफ्रीका से आपने असाइलम क्लेम किया, अफ्रीकन नेशनलिटी है, पाकिस्तान जाना चाहते हो, दिस इज टोटली थर्ड कंट्री, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि जी फरमाइए, आप लाइव हैं जी, सवाल क्या आपका जी? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वो सब आपका नया साल मुबारक हो पहले तो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी। तो मेरा एक सवाल है कि मैंने पहले 7 ईयर वाला किया था, अपने बच्चे का तो बहुत फ्यूज कर दिया था उन्होंने। अभी मैंने 10 साल वाला किया है, तो वो नेशनलिटी मेरे बेटे को दे दी उन्होंने। राइट। तो अभी मैंने उसका पासपोर्ट अप्लाई करने गया था आज पोस्ट हाउस में। वो कहते हैं अभी आईडी लेके आओ ना। आईडी किसकी? इसकी वालदा की आईडी लेके आओ, पासपोर्ट, तो फिर हम अप्लाई करेंगे पासपोर्ट। तो वो पासपोर्ट ऑलरेडी होम हाउस में पड़े हैं हमारे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी? नहीं, वो ऐसे नहीं होता। जब आपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन करनी है बच्चे की, तो आपने उसके ऊपर जो उसको सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट होम ऑफिस की तरफ से, वो लगाना है, और पेरेंट्स की डिटेल्स देनी है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। उसमें उनकी आईडी पोस्ट ऑफिस को नहीं चाहिए होती, आपने ये पासपोर्ट तो होम ऑफिस में डालना है। आप इसलिए फॉर्म मुकम्मल करके बाकी चीज़ें पूरी करें, उनको भेजें। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी हो तो उसको साथ अटैच कर दें, जस्ट बी एस्टेब्लिश कि यू एंड योर वाइफ एज द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ दिस चाइल्ड। तो जब फॉर्म फिल होता है तो उसमें लिखा होता है कि आपके पेरेंट्स की डिटेल्स क्या है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास ओरिजिनल ना हो, आपके या आपके सोलिसिटर के पास कॉपी लाजमी पड़ी होगी, वो लगा दें, तो तभी उसको कंसिडर कर लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया नबीला। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज दे हैव नो एन आईडी विद देम, एंड हाउ दे कैन प्रूव द आईडी? Well, the ID they do have is with the Home Office. And so what they might have to do in order to make an application is to ask for the passport back, or copies of the passport. The copy of the passport was certified by the Home Office. By the Home Office, and then use those documents in order to make the relevant application. मेरे ख्याल में आप कॉपी लगाएं, इससे आपको वीज़ा मिलना चाहिए, वो पासपोर्ट आपको ग्रांट कर देंगे, बच्चे को इशू नहीं आना चाहिए। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो
हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है जी? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने ना एक्चुअली में मेरे को लीव टू मिली थी पहले, तो मेरे पार्टनर जो थे वो पास्ट अवे हो गए लास्ट मार्च को, तो मैंने दोबारा अपना इंडेफिनिट के लिए भेजा था पासपोर्ट। तो मैंने मई का भेजा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप 6 मंथ हमें कुछ पूछना नहीं, हम 6 मंथ के अंदर अंदर आपको भेज देंगे। मगर अभी 6 मंथ से ऊपर हो गया, अभी जनवरी आ गई, तो अभी तक उन्होंने मेरे को मेरा कोई इंडेफिनिट का कार्ड या पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं भेजा। मैंने यही पूछना था कि इसका रीजन क्या है, कि इतना टाइम क्यों लेते हैं वो लोग? ओके इन्होंने आई थिंक ऑफ द राइट। अब आपका क्या है कि वो ये नहीं कहते कि 6 मंथ पूछना नहीं है, वो कहते हैं कि ये नॉर्मल होम ऑफिस इस तरह की एप्लीकेशन को डिसाइड करने में 6 मंथ लगाता है। तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जो 6 मंथ के बजाय नहीं कवर होते, वो साल तक चले जाते हैं। बट आपके पास राइट है कि अब 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया, उनको ईमेल करें, फ़ोन करें, लेटर लिखें। अगर आपका सोलिसिटर या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप उनको चेज़ अप करें, मेरे केस में क्या जा रहा है। लेकिन अगर साल से ज़्यादा टाइम हो जाए और उस वक्त भी कोई रिप्लाई ना करें, या अभी भी आपको राइट है कि आप लोकल अपने MP के पास जाने के लेटर लिखें होम ऑफिस को, ताकि मेरे केस को स्पीडअप किया जाए। अगर ये भी मामले तमाम चीज़ें आपके लिए वर्केबल ना हों, तो फिर आपके पास राइट है कि 1 साल गुजरने के बाद फिर आप उसके खिलाफ कोर्ट में इलेक्शन प्रोटोकॉल डाल के उनको जुडिशरी में लेके जा सकते हैं कि मेरा केस डाला हुआ है, साल हो गया है, मैं अनफॉर्चुनेटली पहले विक्टिम हुई हूँ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की, और अभी आप मेरे केस को कंसिडर नहीं कर रहे एंड यू टेकिंग मोर देन 1 ईयर्स। सो आप उनको अगर वर्स्ट कम सिनेरियो में आप उनको फिर पेशेंट प्रोटोकॉल करके GR में लेके जा सकते हैं ताकि उनको केस को स्पीड अप करें, लेकिन it will be the last options. Yeah, I mean, with judicial review, you can challenge the Secretary of State that the delay is unreasonable. Right. The first port of call should be to complain to the Secretary of State through their internal processes. Yep. The more than 6 months means that there is a problem in the application process. There's been unreasonable delay. Up to more than a year, there is a very good chance that you will get a successful resolution to a judicial review challenge. What will happen is that you'll start pre-action protocol. The Secretary of State will then hopefully write back to you and respond and say, I am looking at this matter. We should be able to respond within a certain period of time. 2 weeks or 4 weeks time. And then you will wait till that time. If that time passes and you still haven't had a response, you can then apply for judicial review at the upper tribunal, saying that the delay is unreasonable and causing you problems. And then you should have some sort of response as to why that delay is happening. And usually what happens is that the judicial review is settled by the Secretary of State providing a response. All right. Thank you, Nabila. Time for break. With us मिलते हैं वक्फे के बाद. Welcome back after break. लेते हैं कॉल जी, फरमाइए. Hello. Hello. हेलो सर. जी hello. हेलो. जी फरमाइए जी. गुड इवनिंग सर. Good evening sir. मेरे 2 सवाल सी छोटे जी फरमाइए जी. एक हेल्थ चार्ज ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈਗਾ ਆ? ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 7 ਇਅਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FLR ਉਹ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕਰਾ ਸਕਦਾ 7 ਇਅਰ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ. ਡਬਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਹੈਲਥ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 500 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 1000 ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਆ. ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਟੂ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ NHS ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ IHS ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਰੋਮ ਟੁਮਾਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉਹ 1000 ਫੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਆ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ FLRO ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ FLR ਸੀਗੀ ਪਾਈ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ FLR FP ਹੋਣੀ ਆ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ 7 ਇਅਰਸ। ਤੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਤੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਐਜ਼ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा सवाल मेरी वाइफ के मुतालिक है। जी फरमाइए। वो फिलहाल FLRM पे 5 साल मुकम्मल करने वाली और अगस्त में उनके 5 साल मुकम्मल होंगे और इंडेफिनिट लीव के लिए एप्लीकेशन करनी है। राइट। उससे मुतालिक मेरा सवाल ये था कि मुझे पता चला है कि एब्सेंसेस आउटसाइड द UK 90 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आखिरी 12 मंथ्स में, लेकिन इस पर कुछ दो राय भी हैं। तो आप सवाल पूछे, राय की बाद में बात करते हैं। आपका सवाल क्या मेरा भाई? जी सवाल ये है कि जो है ये आखिरी 12 मंथ्स में कितनी एब्सेंस हो सकती है FLRM से ठीक इंडेफिनिट पे, और दूसरा एक उसके आगे जो है कंटिन्यूशन ये है कि जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कोई एब्सेंसेस आउटसाइड द UK होती हैं। राइट। अगर आप स्पाउस वीजे पे हों तो लॉ ये कहता है कि आप 90 डेज से ज़्यादा पर ईयर आउट ऑफ कंट्री स्टे नहीं कर सकते। ये सिर्फ आखिरी 12 महीने के लिए नहीं है, ये फॉर द लास्ट 5 ईयर्स के लिए है। और अगर आपने किसी भी टाइम मोर देन 90 डेज किसी भी साल में ज़्यादा बाहर गुजारे हों, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसकी रीज़न क्या है। स्पेशली लास्ट 12 में तो उससे मोर स्टिक हो जाएगा, बट अगर किसी भी साल में आपने 90 से ज़्यादा गुजारा होगा तो आपको उसकी रीज़न एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उसकी रीज़न क्या थी। अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो दे विल कंसिडर, अदरवाइज माइट बी दे विल एक्सटेंड योर वीज़ा एज ए स्पाउस फर्दर। और सेम ही नेशनलिटी के लिए भी आएगा रूल्स कि आपकी जो 90 डेज़ वाला रूल है वो अप्लाई होता है नेशनलिटी के लिए भी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि दो राय शायद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है कि 90 डेज से ज़्यादा स्टे करने, तो उसको आप एक्सप्लेन करें, अदरवाइज दे हैव अ राइट टू बी रिफ्यूज। सो बी केयरफुल। आई एम नॉट डिस्करेज यू, लेकिन थोड़ा सा ये केयरफुल होना पड़ेगा आपको। मिस नबीला, सॉरी प्लीज आस्किंग यू, a lot of people they just assuming just only last 12 months, but the law even clearly very say you can't stay more than 90 days and out of the country on each year, in total 450 days in 5 years. So this is the law is I think that I would be very careful about exceeding the requirement, the limit placed on you whilst you're on a discretionary leave basis or the immigration rules even. So until you get indefinite leave to remain, yep. You should comply with the time limits prescribed on you for your for the time outside of the United Kingdom. आपकी कॉल का शुक्रिया। मिस नबीला, I think before I take the next call, I just could you please just give me some brief about Mr. Sajid's statements? People asking, a lot of people asking the same questions. Yes, the Home Secretary has said that a genuine refugee would claim asylum in the first safe country he or she reaches, which would mean that so in the case of the migrants who were crossing over from France to the United Kingdom, if that's right, they wouldn't be coming to the UK, because of course in order to come to the United Kingdom the route would be via Europe, and so it then takes me back to the initial discussion that we had about refugee camps existing in Greece and in Italy. The fact is that, as well, don't they? Yeah, but the fact is that there is an agreement in Europe amongst the European countries, and the agreement is that if a refugee or an asylum seeker has claimed asylum in the European country, then there's a record of it, so there'll be a name, their biodata, their fingerprint, because there's an obligation to take the fingerprint. And if they then leave that country to come to, for instance, the United Kingdom, and the Secretary of State does a search of the Eurodac and finds that they've claimed asylum in Greece or in Italy, the Secretary of State will then send back the individual
to that third safe country because there's an agreement that that should happen. Third safe country means initially where they came into the Europe. No, the third safe country being a European country. Okay, so the agreement is between the European countries, yeah. and the agreement is that the European country will take back any asylum seeker that first claimed asylum or first registered for asylum in their country. Right. That agreement won't be in operation post-Brexit. And this will be, So this is one of the areas that is going to be subject to a agreement outside of the EU agreement, because we won't be a member of this club anymore. What is the status? So a lot of the Iranian people, when they go to Turkey, they're staying in the camp of the refugee camp, and they claim, I think, the asylum there. And once they granted the asylum, then they can fly to the USA. Well, of course. There's a Turkey agreement towards Kurdistan. Well, there is a form of registration. Yep. And the grant in Turkey is for a short period of time for those who are fleeing persecution in relevant countries, for instance in Syria, because of the political turmoil there. They would then be granted some sort of registration and some sort of temporary permission to stay in Turkey. But I'm not an expert in Turkish asylum law. But the point, I think, that what you're trying to flash out from me is what happens to those who, for instance, fled wars in Syria, who fled Iraq and end up in Turkey. Well, Turkey has, under the EU-Turkey agreement, an agreement to hold back these refugees from leaving Turkey and coming to Europe. But many people do make that crossing from Turkey to the EU, and then they are dealt with at the different first places that they claim asylum. For instance, in Greece, it would be a lot of people end up in Lesbos because of the sea crossing being shorter, and so they are then processed in Lesbos and allowed to the main island, land, Athens, under certain conditions. If they're vulnerable, for instance, and they shouldn't be living in a camp, they'll then be processed in Athens. In details, and let us take the calls. Hello. 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 जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आप फोन पे बात करें। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे स्पाउस वीजे पे हूँ और 1 साल मुझे हो गया, और अब मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो बुलाना चाहता हूँ। मेरे फादर की एज 65 और मदर की 60 है, और वो पाकिस्तान में है। और मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं उनको यहाँ पे परमानेंट बुला सकता हूँ, और जबकि मेरे जो बाकी बहन भाई हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं है। और आपकी बाकी फैमिली कहाँ पे है? जी सॉरी, आपकी बाकी बहन भाई कहाँ पे है मेरे भाई? 2 जो है वो इंग्लैंड में है, एक जो है वो सऊदीया में है, और एक और सिस्टर है वो इंग्लैंड में स्टडी वीजे पे आ रही है। और पाकिस्तान में कोई नहीं आपकी फैमिली में से? नहीं, कोई नहीं। और अब इसमें लॉजिक कहता है, मैडम प्लीज इफ यू कैन एक्सप्लेन फॉर द एल्डर डिपेंडेंट्स इज टफ ऑफ कोर्स। There used to be a route whereby those who were elderly, 65 plus, more than 65, who were either jointly seeking to come to the United Kingdom as the parent of a British or a settled person in the UK, a route that allowed them to come and settle with their son or daughter. That route no longer exists, and it has unfortunately become more difficult. And so if you're seeking to have your parents join you and they're over 65 years of age, you will have to show additional matters such as infirmity, difficulty in their living because of their medical condition. मेरे भाई मिस नबीला थोड़ा से फॉर्मल हो रही हैं, लेकिन मैं सॉरी एज ए प्रैक्टिकली बात कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब तक आप इस केस में क्या है कि लॉ था कि अगर आपके पेरेंट्स 65 से प्लस हों और उनको लुक आफ्टर करने वाला आपके होम कंट्री में कोई ना हो, तो वो यहाँ पे यूके में एज ए एल्डर डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब से ये लॉ चेंज हुआ है सिंस 9 जुलाई 2012,
उस वक्त से लेके अब तक जो एल्डर डिपेंडेंट का जो एप्लीकेशन है बड़ा ही वो टाइटली और उसकी बड़ी ना टफ किया हुआ है। स्पेशल वो लोग जिनके सारी फैमिली के पास फॉरेन नेशनलिटीज़ ना हों या अनफॉर्चुनेटली फिज़िकली खुद काम ना कर सकते हों, मोबिलिटी इशू हो, तब तक वो उनको वीज़ा ग्रांट नहीं करते। आपके केस में आपको हम नॉट वांट टू डिस्करेज यू, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर कि आप अप्लाई करें उनको वीज़ा मिल जाएगा। आइडियली उनको विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें किसी और कैटेगरी में, लेकिन अगर डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा तो जब तक आपके तमाम दो फैमिली के मेम्बर जो हैं वो फॉरेन नेशनल ना हों, पाकिस्तान में कोई रहता ना हो, तो ये इस्टेब्लिश करना या हम उसको सेटिस्फाइड करना इस बात पे कि उनके लिए मोबिलिटी इशू है, उनको लिए डिपेंडेंसी बहुत मैटर है, तब तक वो आजकल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए क्योंकि आपने सवाल पूछा आंसर करते हैं, लेकिन I'm not going to stop you, but it's very requirement very high nowadays for this matter. Unfortunately, you're quite right. I mean, if they've got medical conditions and they require care, then they're going to have to show that there isn't anyone available in Pakistan to care for them, physically, and that is going to be very difficult because, of course, there are a lot of options. There are lots of options. Carers are available, relatively inexpensive. Money can be sent from the United Kingdom to have carers care for them. They've managed to live in Pakistan until now, and so there's going to be an inquiry as to how they've been able to live there. It is much more difficult, and as Riaz has said, you will have to provide evidence of medical issues that they may have, difficulties in them having to care for themselves, etc. आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, हमारा और आपका साथ यहाँ तक। Miss Nabila, really much appreciated for coming on the show. Thank you. With the request, we will see you next Monday as well. And नाज़रीन, आपका और हमारा साथ यहाँ तक जिन्होंने हमें कॉल किया शुक्रिया। नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।